बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CS604 क्विज़ नंबर फर्स्ट के ऊपर, जिसकी लास्ट डेट 29 है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इन डेड लॉग डिटेक्शंस एंड रिकवरी algorithm are deadlock exist in the systems if and only if the wait for graph contains a cycle. Second question is, what do we want name to an address that is loaded into the memory address register of the memory physical address? अच्छा, ये मैंने अपने भी किए हुए हैं और किसी के भी किए हुए हैं। ठीक है ना, तो ये 20 क्वेश्चन बनते हैं, 20 क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, जो मैंने 10 और इसमें ऐड कर देता हूँ, वो भी आप इसको स्टडी कर लीजिए इकट्ठे इनके। सो उसके बाद रेफर टू द सिचुएशंस व्हेन फ्री मेमोरी स्पेस एग्जिस्ट टू load a process in the memory but the space is not contiguous external fragmentation. Fourth question is, in dash technique memory is divided into several fixed size partitions. Multiprogramming with fixed task MFT. When the address used in a program gets converted to an actual physical RAM address, it is called an addressing mining. Typical monitors a high-level scanalization tool is characterized by local data and programmer-defined operators. Seventh question is, dash is case due to run unused space is fixed size block pages internal fragmentation. ये क्वेश्चन 2 मरतबा आ गया। ठीक है, the dash schema, the wait for graph scheme, is not applicable to a resource allocation system with multiple instances of each resource type wait for graph. So next question is, the conditions in which a set P0, P1, Pn of waiting process must exist such that P0 is waiting for a resource that is held by P1, P1 is waiting for a resource that is held by P2, and so on. Pn1 is waiting for a resource held by Pn, and Pn waiting for a resource held by 0. This condition is known as circular wait. ये जितने भी P1, P0 जो उनसे ना वो एक सर्कल में वेट कर रहे हैं। ठीक है, सो question number 10 is, in swapping technique of memory management, the total amount transfer time is directly proportional to the amount of memory swapped. तो ये था इसका क्वेश्चन, इनके पहले क्विज के 10 आंसर, और जो से नेक्स्ट जो आंसर मैंने किसी के किए थे वो मैं अब आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। सो आवर लेस आर implemented by the programmer. The set of all physical address corresponding to the logical address is a physical address space of the process. देख लें, क्वेश्चन 2 है और CS604 टाइम ये देख लें। और क्वेश्चन नंबर 3 इज़, ये देखें, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज केस ड्यू टू अनयूज्ड स्पेस इन फिजिकल मेमोरी. Dash is the process of mapping a name to an address binding. A state is safe if the systems can allocate resource for each process in some order and still avoid a deadlock. Safe, ये भी second time आ गया क्वेश्चन। If the systems can allocate resource to each process in some order and still avoid a deadlock, then it is said to be in safe state. Question number 8 is, physical memory is broken down into fixed size blocks called frames, and logical memory is divided into blocks of the same size called pages, frame and pages. Secondary storage memory device have permanent and non-volatile memory. और
क्वेश्चन इज लास्ट वन जो सा वो है इन डेडलॉक detection and recovery algorithm are deadlock exist in the systems if and only if the wait for graph contain a cycle। सो ये थे आज के 20 क्विज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दे ताकि मज़ीद आने वाली अपडेट्स क्विज़ असाइनमेंट और जीडीबी आप तक पहुँच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।